as you can see behind me, we are at Kathi and this is one of the busiest spots from our college. So now we'll go to each of them and ask about their experience on the BU Kathi junction. So let's Come with us. क्या हम 2 मिनट के लिए आपसे बात कर सकते हैं? आप यहाँ पे कितनी देर से खड़े हो? 15 to 20 minutes. आप यहाँ पे कितनी देर से खड़े हो? ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो चुके हैं. मुझे तो मोर देन 30 मिनट्स हो गए यहाँ पे खड़े रहते हुए अभी तक. आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ. आपने यहाँ पे खड़ा होकर ऑर्डर लिया है, आपको कितना टाइम लगा है और आपके क्या क्या प्रायर एक्सपीरियंस है इसके बारे में? प्रॉब्लम्स बेसिकली है वो क्यू टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो फिर उसके कारण ऐसा अगर कोई भी तरीका होता, कोई भी वेबसाइट या फिर कुछ भी होता जिसके कारण हमें कोई अलर्ट आ जाता कि जब अपना फूड अगर प्रिपेयर हो चुका है तो हम आके कलेक्ट कर ले, तो वो मच बेटर रहता. थैंक यू. तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए we are presenting BUFC. BUFC is an online food ordering platform from where you can access the outlet and order your food from wherever you want. So our platform basically consists of 2 portals. One is for students and one is for staff. Students can order the food as per their requirements, and now what the staff can do, they can customize the order status and the students will get the notification as per the prior done. So this was the working of our BUFC. So now we are moving towards the outlet to receive some valuable guidance and reviews about our product BUFC from the staff point of view. So let's come. ये जैसे आजकल बहुत भीड़ हो जाती है आपके पास, तो आपका इस पे क्या कहना है? हाँ, भीड़ तो बहुत होती है. तो अगर मैं आपको कहूँ कि हमने एक ऐसा ऐप बनाया है जिसके ऊपर आप अपना सारा सिस्टम ऑनलाइन कर सकते हो और उससे भीड़ भी कम हो सकती है, तो हाँ अच्छा होगा, बढ़िया ऐप होगा तो चल जाएगा. और कुछ so as you can see, the Bhaiya is also agreeing with our app. Thank you. The working of a project will solve all the problems discussed in the video earlier. This is our home page. Here we click on login. Here we can see 2 login buttons, one for staff and other one for student. First, let's log in as student. Here we can see students' order and their status. Now we will place a new order. Let's add paneer and chicken kathi roll. Now we will place an order on COD and the order is placed successfully. Now let's log in as staff member. Here the staff can see the orders placed by the student and manage them by clicking on manage orders. If a new order arrives, the staff can mark it as start preparing, and when it is ready, the staff can mark it as ready. And when it is received by the student, the staff can mark it as completed and can see all the completed orders in the completed tab.